Good morning, class 6. Myself Ranjit Kumar. I welcome you all in the e-learning program of Modern English School, Kunti Nagar, Nevada. This is the sixth video lecture of the chapter Body Movement. In yesterday's video, we have discussed about the ball and socket joint. So in today's video, we are going to discuss hinge joint, pivot joint, and gliding joint. Hinge joint. What is hinge joint? Joint which is found in the elbow and the knee is called hinge joint. If you have drawn the picture which I have drawn in last to last class, that on the board, if you have seen that carefully, or if you see in your book you carefully, you will understand this. See this. This is the upper arm bone and this is the forearm bone. And see here, this is slightly, if you see here, ये पोर्शन थोड़ा सा अंदर धंसा हुआ है और ये पोर्शन थोड़ा बाहर निकला हुआ है. So one bone which is slightly convex means bulging out, and one bone is slightly concave which is depressed inside. एक बोन जो है वो कॉन्केव है, मतलब अंदर धंसा हुआ है. दिस इज कॉन्केव मीन्स डिप्रेस्ड इनसाइड स्लाइटली. ये थोड़ा सा अंदर की ओर धंसा हुआ और ये थोड़ा सा उठा हुआ है. दिस इज कॉन्वेक्स. Slightly bulging. Bulge मतलब फूला हुआ. So one convex bone fits into the one concave bone. This is called hinge joint, and that allows only movement. If you see the arm, you can bend your forearm and straighten it. You cannot take it in this direction or this direction, any other direction. You can do only a particular movement, means you can bend it and you can straighten it. It is just like the hinge of the door. So if you see, this is the joint of knee. The diagram which I have provided, from there also you can see this is the bend inside means concave bone, and this is the convex bone. So what it shows, in this type of joint, a convex bone fits into a concave bones, and that allows only slight movement, and this slight movement is found in the hinge joint. Okay, so what is hinge joint? In this type of joint, the convex, that is slightly bulging, surface of one bone fits into the concave, slightly depressed surface of another bone, allowing movement in only one direction. Where it is found? It is found in the joint at elbow and joint at knee. So these are the example of the hinge joint. Next is pivot joint.
In pivot joint, see, this is the skull and this is the backbone. So you can say a circular ring-like bone fits into a straight axle-like bone. A circular ring-like bone of the head fits over the straight axis, or you can say pivot point. So stick like, you can say a circular ring like bone fits on a stick like bone. ये एक लकड़ी है और लकड़ी के ऊपर एक रिंग लाइक का बोन रखा हुआ है. So this allows movement in these direction. So these are called pivot joint. So pivot joint is where it is found. It is found between the head and the backbone, that is the spine. So what is pivot joint? In such joint, a bony ring rotates around a pivot. पिवोट को एक्सिस भी कहते हैं, और stick like bone. So this is called pivot joint. This allows twisting movement about the joint. Okay, example, head joint to the top of spine. Means spine means backbone के ऊपर head रखा हुआ, that is pivot joint. So hinge joint done, pivot joint done. Next is gliding joint. Gliding. See, you remember backbone? In backbone, I have told you one bone fits over the other. One bone fits over the other, and like this 33 small bone together form the backbone. So the junction between these two bones, any two bone, is there, cartilage is there, and this cartilage help little bit movement. What I am saying, try to understand carefully. If I am saying this is the first joint, means this is the, if I am going from bottom, this is the first bone, this is the second bone. It allowed little bit movement, थोड़ा सा movement, slight. पहला बोन है और ये दूसरा बोन है, ये slight movement, हल्का सा movement दिया. ये ज्वाइंट और ये ज्वाइंट मीन सेकेंड बोन और थर्ड के बीच में स्लाइट मूवमेंट और है, मतलब ये दो ज्वाइंट स्लाइट मूवमेंट देगा, उसी प्रकार ये दो बोन भी थोड़ा स्लाइट मूवमेंट देगा, ये दोनों भी थोड़ा स्लाइट मूवमेंट देगा. मींस 33 बोन्स में स्लाइट 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 हल्का 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 मूवमेंट जो हर बोन के बीच में है, दैट टुगेदर will help us to bend, help us to move, bend forward, bend backward, whatever we do. So that is done due to the many bones, these 33 bones together, because between two bones cartilage is there, and that allows slight movement. So slight movement between two bones, slight movement between second and third bone, slight movement between third and fourth bone, like that continue till 33 bones. So this will allow little bit movement, that's why we can bend. Same thing goes, if you remember, I have told you that wrist is made up of few number of bones. I have not told wrist is made up of single bone, it is made up of few number of bones. So between each bone cartilage is there, and that will allow movement of the wrist and movement of the
ankle. Okay. So what this gliding joint is found in the vertebrae, means backbone, in the wrist and the ankle. So such joints occur between the vertebrae and between the bones of the wrist and ankles. The cartilage between the bones allow small movements. So the cartilage present between the bones allows slight movement or small movement, just like spring. Just like spring. ये जो लास्ट बात लिखी है ना, दैट जस्ट लाइक स्प्रिंग, इसको एग्जाम में मत लिख दीजिएगा ग्लाइडिंग जॉइंट में सर मूवमेंट लाइक स्प्रिंग. डोंट राइट लाइक दैट, यू हैव टू राइट दिस थिंग. ये सिर्फ समझाने के लिए बोल रहे हैं. क्या बोल रहे हैं? स्प्रिंग जो होता है वो स्ट्रेट होता है. स्प्रिंग का मेन काम होता है कंप्रेशन होना और रिलैक्स होना. बट चूंकि सब स्प्रिंग के रिंग के बीच, एक स्प्रिंग है तो बहुत सारा रिंग होगा, रिंग के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है. सो स्लाइट मूवमेंट के कारण अगर लंबा स्प्रिंग है और उसको ऐसे खड़ा रखिए, अगर छोटा स्प्रिंग है और उसको आप ऐसे साइड वाइज मूवमेंट कराना चाहिए, तो वो साइड वाइज मूवमेंट के लिए नहीं है. वो स्प्रिंग कंप्रेशन और रिलैक्सेशन के लिए है. किसी चीज को कंप्रेस करना और ऊपर की ओर धकेलना, इसके लिए स्प्रिंग होता है. बट चूंकि थोड़ा गैप होता है तो वो थोड़ा थोड़ा मूवमेंट. अब एक काम कीजिए, एक और लंबा स्प्रिंग लीजिए तो वो ऐसे ऐसे होने लगेगा, और थोड़ा लंबा स्प्रिंग लीजिए तो वो और ज्यादा ऐसे ऐसे मूवमेंट होगा. मीन्स ज्यादा लंबा स्प्रिंग लीजिएगा तो वो सीधा खड़ा ही नहीं रहेगा, वो गिर जाएगा. क्यों? क्योंकि हर रिंग जो है स्प्रिंग का वो स्मॉल मूवमेंट दे रहा है. अब जब छोटा रिंग था, छोटा स्प्रिंग था, तो उसमें 7 या 8 रिंग थे, तो स्लाइट मूवमेंट होने के कारण 7 स्प्रिंग मिलके इतना मूवमेंट दिया. अब मान लीजिए कि 70 रिंग है, तो 70 रिंग है तो इतना 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 करके इतना मूवमेंट दिया. तो अब ये जो स्प्रिंग ऐसे खड़ा रहना चाहिए, ऐसे गिर गया. क्यों हो गया ये इसलिए हो गया कि हर रिंग के बीच में थोड़ा गैप था और वो हल्का हल्का मूवमेंट दे रहे थे. और हर रिंग एक दूसरे रिंग के बीच में जो हल्का मूवमेंट था वो टोटल नंबर ऑफ रिंग से मिलके एक लार्ज मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया. ओके, गॉट द पॉइंट? सो दिस इज ग्लाइडिंग जॉइंट. सो होप यू अंडरस्टैंड. If still anyone have any problem, you can ask. Okay.